Mangal Maitri, dear students. In previous class, we learned about the computer system, about IPO cycle, input process output. Today we are discussing about the architecture of computer, input, process, output. Input, the device by which we can enter the data. Output, the device by which we can get output the data. CPU, control unit. Further divided into three parts: control unit, arithmetic logical unit, and MU, memory unit, and external storage, all the activity done by the CPU. Now processing device examples: CPU, central processing unit, graphical processing unit, GPU, motherboard, network card, sound card, video card. These are the example of the processing devices. Now CPU, central processing unit, pronounced CPU. CPU is the brain of our computer that will accept the input and the processing and then get the output. Component of CPU, same as we have already discussed about the CU, ALU and MU. ALU, arithmetic and logical unit for calculation work. Arithmetic means plus, minus, division and subtractions. And logical, when we have the condition based calculations, then we will use the logical calculations. CU, control unit, directs instruction pass करता है for the all the processing operations and check out all the hardware connectivity that is properly connected or not. Memory unit, that will divided into two part: primary memory and secondary memory. Primary memory like RAM and secondary memory the permanent storage unit. Storage devices: hard disk drive, solid state drive, random access memory, CD, DVD, Blu-ray disc, DVD ROM, USB flash memory. These are the so many examples for storage. Permanent storage devices: RAM only the example of the temporary storage device, then all the example of the permanent storage. Here we have some figure: central processing unit CPU, memory, chip, volatile memory, RAM. Now units of the memory. How we can categorize our data? We are discussing about the data. Data क्या चीज़ होती है? कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली जो भी कंटेंट फीड किया जा सकता है वो डेटा कहलाता है. जैसे कोई ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फोटो, इमेज, ग्राफिक्स एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें होती हैं उन सब का एक साइज़ होता है, मेज़रमेंट. हम हर चीज़ के कैलकुलेशंस के लिए करते हैं. जैसे आप कुछ चीज़ें किलोग्राम में लाते हैं, कुछ चीज़ें लीटर में लाते हैं, कुछ चीज़ें मीटर में लाते हैं, तो यूनिट्स हैं ये आपके उस चीज़ को मेज़रमेंट करने की. कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो मेज़र करा जाता है मेमोरी यानी बिट्स की फॉर्म में, बिट बाइट. तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट होती है. देन निबल 4 बिट, बाइट 8 बिट, किलो बाइट 102524 बाइट इक्वल्स टू then 1 megabyte, 1 gigabyte, terabyte, petabyte, zettabyte, and then yottabyte. These are the examples. We are currently working with the terabyte TB. अभी हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो TB तक हार्ड डिस्क हम स्टोरेज यूनिट के उसमें वर्क करते हैं. Then binary system. In previous class, the starting we have learn about the number system, binary number systems. Binary indicates 0 and 1, 0 और 1 से इंडिकेट होता है, जिसमें आपको फैमिलियर विद जिसका बेस 10 होता है डेसिमल सिस्टम्स का, जिसे हम 0101 की फॉर्म में आपको शो करते हैं.